Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are safe at your home. So कुछ दिन पहले ही I requested you guys to ask questions from me और यही सेम चीज़ मैंने Instagram पे भी पोस्ट करी थी and I received so many questions. So thank you for that and now I'm making this Q&A video and मैंने कुछ questions जो है वो select कर लिए हैं ताकि मैं उनका आंसर कर पाऊँ. And also साथ साथ I'll teach you this everyday kind of pink glowy makeup look. So let's just start this video. So I am using this moisturizer first and my first question is what is my profession and qualification. I have written all the questions in this notebook. So my qualification, I am actually MSc Chemistry. मैंने नोएडा से MSc Chemistry करी है और I am a teacher. So I can teach maths and science. वैसे तो मैं science teacher ही हूँ. I teach chemistry basically. So moving on to the next question. Second question is when did you start to make this YouTube channel and what pushed you? So along with that I am using this primer from Calabar and मैंने YouTube कैसे start किया? So when I shifted back to Hisar from Delhi, पहले मैं दिल्ली रहा करती थी and when I started teaching job तो actually उसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था. सो एंड ऑल्सो फैशन से इंटरेस्ट मेरा बहुत पहले से ही रहा है, जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से. तो आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, लाइक ब्लॉगिंग तो नहीं कह सकते, इंस्टाग्राम पे मैंने अपने डेली आउटफिट की फ़ोटोज़ अपलोड करनी स्टार्ट करी. देन मेरी एक फ्रेंड, मतलब मेरी एक क्लासमेट थी, देन शी एडवाइज मी दैट आई शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम. कुछ टाइम मैंने वो किया बट सून आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे शायद यूट्यूब पे वीडियोस बना के पोस्ट करना चाहिए. एंड देन आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन 11th May 2019. तो मेरे पोर्स परफेक्टली ब्लर हो चुके हैं. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू द फाउंडेशन. वॉज इट हार्ड मैनेजिंग बोथ पैशन एंड प्रोफेशन? Actually not really hard because it is just about managing time. अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ डिफिकल्ट होगी या नहीं. सो जॉब से आने के बाद बहुत बार ऐसा होता था कि हाँ मैं थक जाती थी तो मेरा मन नहीं होता था काम करने का, मैं नहीं भी करती थी. बट नाउ मैंने रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से, तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो हाँ पहले प्लस मुझे टेक्निक्स भी नहीं पता था कि कैसे बनानी होती है, कैसे एडिटिंग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी. धीरे धीरे जब मुझे नॉलेज हुई तो मतलब मुझे पता चल गया काफ़ी चीज़ों के बारे में. पहले मुझे एक वीडियो बनाने में मतलब जो फर्स्ट वीडियो पहले मैंने जो बनाई थी इट टुक मी 1 month और अभी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं 2 दिन में बना के उन्हें एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ. तो यार टाइम के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते जाते हो और अच्छे होते जाते हो. So my fourth question is if you had a pet what would you name it? So if I had a pet तो definitely वो beagle dog होता because I love beagle dogs, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं वो. और अगर मुझे उनका नाम रखना होता तो आई वुड हैव नेम देम या तो पीका या फिर कीको बिकॉज मुझे पॉकीमोन देखना बहुत पसंद था जब मैं छोटी थी और मुझे पिकाचू कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है. तो बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर या तो पीका या फिर कीको बिकॉज कीको मिलानी एक्चुअली एक मेकअप की कंपनी का नाम है और मुझे वो नाम बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. तो कीको आफ्टर दैट मेकअप कंपनीज नेम. सो आई एम डन विद माई फाउंडेशन एंड आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम LA Girl. And my fifth question is school days or college days if you would relive one of these again. Okay, school days और college days, definitely college days क्योंकि school days में तो मम्मी बहुत ज़्यादा मारती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने को कहा जाता था. कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था, कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती थी. प्लस कॉलेज जाता कौन था, ये बात मम्मी को नहीं पता कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉलेज बंक किया है. बट अगर वो ये वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा. Next I'm using this Maybelline's concealer in very light shade. Next I'm using this pressed powder from Maybelline and my next question is which content do you enjoy making the most, like styling videos or skincare or funny ones, and which part of it you like the most? Okay, so I like making most styling videos क्योंकि that is the main cause for these YouTube videos. तो of course I like styling videos more. मुझे शुरू से ही स्टाइल करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्लोथ्स को. प्लस विच पार्ट आई लाइक द मोस्ट? ओके, आई लाइक द शूटिंग पार्ट मोस्ट क्योंकि कैमरे के सामने खड़े होके थोड़ा एक्टिंग ही तो करनी है, थोड़ा पोज मारना है, आई फील लाइक अ स्टार. बाकी एडिटिंग वाले पार्ट में इज जस्ट
takes a lot of like, तो थोड़ा सा थका देता है वो part. Okay, so next question is kind of rapid fire that a girl gave me. First is flat or heels. Definitely flats because flats are way more comfortable than heels and मैं तो शादियों में भी flats पहन के जाती हूँ यार क्योंकि डांस करना होता है. And to filling my brows I am using this Wet n Wild brow filler. Next I am using this brown color for my crease. And next question is Indian versus Western. I like Indian outfit more, especially साड़ी. साड़ी पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब अच्छी ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन बनाने की साड़ीज़ की. So yeah, I am buying more and more and more sarees and I love Indian. Next I am using this pink eyeshadow on my eyelids. And next question is Daredevil or Night Fox. नीदर Daredevil nor Night Fox क्योंकि ना तो मैं बहुत लेट तक जाती हूँ और ना ही मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हूँ. So I am somewhat intermediate between it. I am actually evening koel. Cool. Next is jeans और pajama PJ. So I love wearing pajama. मेरा बस चले मैं तो बाहर भी pajama ही पहन के जाऊँ. इनफैक्ट मैं जाती भी हूँ बहुत बारी जब मेरा मन नहीं होता रेडी होने का तो मैं pajama में ही बाहर चल जाती हूँ. I have huge collection of pajamas. Striped pajama, plain pajama, printed pajama, polka dots वाले pajama. I like styling clothes but मैं हमेशा वही style prefer करती हूँ जिसमें आप comfortable भी रहो. So I have filled this pink color completely on my eyelids and now I am using this very peachish pink color on the front part of my eyes. I am using the same pink color on my lower lash line. So I am done with my liner because I can't use liner while talking, तो इसलिए मैंने वो part skip कर दिया. And next question is how do you overcome your anxiety or fear? Okay, I eat and then I eat and then I sleep and then I repeat. तो बस यही करती हूँ मैं. बहुत ज़्यादा खाती हूँ और सो जाती हूँ but that is actually not the solution. Fears or anxiety, I guess you need to share your things with someone. तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो that's what I do. I start sharing or I also keep sharing with my friends or family. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको कोई solution नहीं दे सकते but that is still okay because when you share your things अगर जब आप अपने अंदर की बातें बाहर निकालते हो तो you feel very light. तो हो सकता है solution ना मिले but you feel good. I am using this Maybelline's Total Temptation mascara. So I'm done with my eyes. Is when I am getting married. ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं. And this is not happening because of China और मेरे काल सर्प दोष की वजह से. And I'm using this blush from NYX Love Lust and Disco. Disco दीवाने. Okay, next question. How and when did you two meet? Who initiated first? So how and when we met? Okay, when we met. So actually we have this one common friend. तो मैं उसकी वजह से ही अपने fiancé से मिली थी. So I know him from past 8 years. तकरीबन 8 साल से, almost 8 years से मैं उसे जानती हूँ. But हम कभी बात नहीं करते थे ऐसे. हाँ पता था कि हाँ ये exist करता है और उसे पता था मैं exist करती हूँ. But after so many years, one day he asked me to meet और मुझे भी ऐसा था कि चलो मिल लेते हैं, कोई बात नहीं. लाइक हाँ बहुत टाइम पहले से जानती हूँ मैं तो ठीक है मिल लेते हैं. सो मैं उससे मिलने गई एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग एंड आई फेल इन लव. मैं उसके प्यार में डूब गई एंड देन आई प्रपोज हिम फर्स्ट एंड ही टुक 2.5 months मुझे हाँ बोलने के लिए, मुझे सुंदर लड़की को हाँ बोलने के लिए. So I'm done with the highlighter और मेरा फेस एकदम चमक 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 रहा है. And now I'm using this lipstick from L'Oreal Paris in shade 121 and this is the last step of my makeup and the last question for this Q&A video. What are your plans about future? Just YouTube or something else too? Definitely not just YouTube because YouTube is what I like to do but that is not my profession. I like teaching as much as I like making videos. So I love being around with kids and so I can't like leave teaching.
सो आई विल कंटिन्यू टीचिंग एज वेल, एंड अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो भगवान की मेहरबानी होगी मेरे ऊपर, अगर कभी मिल जाती है तो। आई थिंक ये ज़्यादा पिंक पिंक हो गया है, सो आई एम गोना चेंज दिस लिपस्टिक। एक्चुअली चेंज नहीं करने वाली हूँ मैं, बस इसको ओवरकोट कर दूंगी विद दिस शेड LA Woods फ्रॉम शुगर। सो दैट्स द फाइनल लुक एंड आई रियली लाइक दिस लुक। एंड मुझे अगर कहीं पर भी फटाफट से जाना हो तो मैं फटाफट से ये लुक कर लेती हूँ। एंड दिस इज वेरी easy and everyday kind of look that goes with any type of outfit. So yeah, that is it, and that is it for the Q&A video. Also, thank you so much for sending so many questions, and I hope you guys enjoyed this. Bye bye.